So good morning students. In the last class I was telling about buffer solution. So buffer solution is a solution whose pH value, the pH value of which does not change appreciably, it changes. आमे गोटे acid बा base add करूचे माने the pH value will change, but the change is so less that it can be neglected. So that is why we consider it that the pH value remains constant. So buffer solution is a solution whose pH value does not change appreciably by the addition of small amount of acid or base or water to it from outside. Hala. So this is a buffer solution. Buffer solutions are of two types, acidic buffer and basic buffer. And acidic buffer, that is prepared by taking equimolar mixture of a weak acid and its salt with strong base. गोटे weak acid आउ तार salt with a strong base ए दीटा को आमे इक्विमोलर proportion रे same number of moles नहीं कि आमे गोटे acidic buffer solution prepare करी पारिबा. And another type of buffer solution is basic buffer. So basic buffer is prepared by taking equimolar mixture of a weak base and its salt with a strong acid. So example of acidic buffer, one example that is I have told you acetic acid and sodium acetate. Acetic acid is a weak acid and its salt with a strong base sodium hydroxide. The salt formed is CH3COO. That is called sodium acetate salt. So sodium acetate is a salt of weak acid, that is acetic acid, with a strong base, that is sodium hydroxide. Similarly, example of basic buffer is equimolar mixture of ammonium hydroxide and ammonium chloride. Ammonium hydroxide is a weak base and ammonium chloride is its salt with a strong acid. NH4OH weak base, HCl strong acid, NH4OH and HCl they react to form NH4Cl plus H2O. So NH4Cl is a salt of weak base and strong acid. So these are the two types of buffer solution generally, and I had told you what is buffer mechanism. The resist जो buffer solution जो pH टा को maintain करके रखे change होगा को दिए नहीं by the addition of acid or base or water to it from outside, that is called its buffer action. So how the pH value remains constant? pH value of a buffer solution remains constant even after addition of small amount of acid or base or salt water to it. जदियो आमे अल्प परिमाण रे एसिड बा बेस बा वाटर बाहरु आमे ऐड करिबा गोटे स्मॉल अमाउंट रो गोटे बफर सॉल्यूशन को ताहाले केमिति तार पीएच वैल्यूटा चेंज होउनी सेटा मु तुमको लास्ट क्लास टिके कहिथिली. ताले फर्स्ट वी विल सी हाउ the pH value of acidic buffer solution so see आगे नबा acidic buffer action heading कर दियो buffer action means how the buffer solution maintains its pH से केमती ता pH वैल्यू को चेंज होबा को दिए नहीं, that is called buffer action. ताले acidic buffer, so let us consider an acidic buffer that is equimolar mixture of acetic acid and sodium acetate. Hela so CH3COOH, it is a weak electrolyte, so it will dissociate to give CH3CO minus plus H plus and salt CH sodium एटा को कौन कहती CH3CONA, that is sodium acetate. So this dissociates to give CH3CO minus plus H plus. Hela
ताले वर्तमान आमे देखिबा हाउ ऑन एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस द पीएच वैल्यू डज नॉट चेंज। ताले देखो आगे लेख एडिशन ऑफ एसिड सॉरी Na प्लस सो एडिशन ऑफ एसिड तुमको कही थी लास्ट क्लास रे केमती एसिड ऐड कले आमे सपोज आगे देखिनि एसिड टा ऐड कले कौन HCl गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड स्मॉल अमाउंट रो आमे ऐड कले कौन ना HCl ताले HCl डिसोसिएट हम कौन H प्लस Cl माइनस ताले आमे जते बेले एसिड टा ऐड करूचे बफर सॉल्यूशन रे एटा कोठी ऐड करूचे आमे बफर सॉल्यूशन रे एसिड टा ताले एसिड रो किए pH वैल्यू को चेंज करि परिबो बफर सॉल्यूशन लो H प्लस आयन ताले आमे जेतिकी HCl ऐड कले सेथिरु जेतिकी H प्लस आयन बाहरिला से H प्लस आयनटा जदि कंज्यूम हो गला अर्थात क्या सांगे रिएक्शन करदेला जी H प्लस आयन बाहर ताले आउ एक्सट्रा एक्सेस H प्लस आयन रही तेणु सॉल्यूशन रो pH चेंज हम नहीं किंतु से H प्लस आयनटा जदि यूटिलाइज न होइकी सेमिति रहीगला कंज्यूम न होइकी ताले दैट विल डिक्रीज द pH ऑफ द सॉल्यूशन H प्लस आयन कंसंट्रेशन अधिका हेले कोन हबो pH वैल्यूटा डिक्रीज हबो कमिबो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक सो you see as soon as the H plus ions are released what will happen ए H plus ion टा जाई कि एटा पॉजिटिव आयन तेणु ये कहा संगे रिएक्ट करिवो नेगेटिव आयन संगे तेणु ये H plus आयन जाई कि कहा संगे कंबाइन कर जीवो एसिटेट आयन संगे कंबाइन करी कि एसिटिक एसिड फॉर्मेशन करि दबो हला तेणु H plus ion excess H plus ion which we have added that is completely consumed in the reaction सेटा कोन हला H plus ion टा हमरो कंज्यूम हे गला एक्सेस हे कि और रहिला नाही एसिडिक एसिड हे गला तेणु हमरो सॉल्यूशन रो pH चेंज हला नाही हला ताले लेखो when a few drops of HCl is added to the above buffer solution the H plus ions of HCl combine with acetate ion to form acetic acid हला so the pH value of the solution does not change as acetic acid is a weak electrolyte. ये कंबाइन करके H प्लस आयन एसिडिक एसिड एटा वीक एसिड बोली वीक इलेक्ट्रोलाइट माने कोन वीक एसिड बोली कंबाइन करके रही गला जदि एटी HCl फॉर्मेशन होउथांता ताले से को फॉर्म रे रही थांता आयोनिक फॉर्म रे रही थांता कंबाइन करी पारी न थांता सेति भाई मठी लेखिली एटा गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट बा वीक एसिड जहा लेखि पारी हला एडिशन ऑफ बेस आमे कोन ऐड करिबा NaOH गोटे स्ट्रांग बेस ऐड कले NaOH डिसोसिएट करके कौन है Na प्लस OH माइनस एंड दिस OH माइनस आयन एटा हला कौन नेगेटिव आयन सो दैट विल कंबाइन विथ व्हाट H प्लस आयन yes or no OH माइनस आयन टा का संगे कंबाइन करिवो Na प्लस H प्लस संगे कंबाइन करिवो किंतु Na प्लस संगे से कंबाइन करि परिबो नाही आयनिक काहे ना स्ट्रांग बेस हे जिवो सेटा आयनिक फॉर्म रे रहिबो तेणु OH माइनस विल कंबाइन विथ H प्लस आयन तेणु एठी pH चेंज करि पारथांता किए OH माइनस आयन वर्तमान दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन हला सो नो चेंज इन pH so when a few drops of NaOH
is added to the buffer solution, to the above buffer solution OH minus ions of NaOH combine with H plus ions of acetic acid to produce water. So the pH of the solution does not change as water is a weak electrolyte. ହେଲା केमती बेसिक बफर चेंज होनी ताले देख लेट अस कंसीडर a basic buffer that is NH for ammonium hydroxide and ammonium chloride. जोड़ा ना मन रोनी ता तले लिखिदेव दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज अमोनियम क्लोराइड. सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड that is a weak base, it dissociates to give NH for plus OH minus, and ammonium chloride it dissociates to give NH for plus Cl minus. Hello. Then addition of acid. Hello. ताले वर्तमान ताले वर्तमान देख जितेबाला एसिड फ्यू ड्रॉप्स ऐड करवा धर HCl ताले H प्लस Cl माइनस ताले वर्तमान देख H प्लस आयन टा केमती कंज्यूम हो पारुछु कि एटा पॉजिटिव आयन ये का संगे कंबाइन करि परिबो OH माइनस बा Cl माइनस संगे कंबाइन करिवोनी ताले कंबाइन करिवो का संगे OH माइनस संगे ताले H प्लस आयन विल कंबाइन विथ OH माइनस आयन टू फॉर्म वाटर. वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट सो द pH value of the solution will not change. हला सो लेखो when a few drops of HCl is added to the buffer solution is ऊपर above buffer solution, the H plus ions of HCl will combine with OH minus ions of NH for OH to produce water. Hala. So the pH value of the solution, buffer solution will not change. Buffer solution
will not change as water is a weak electrolyte. निजे निजे लिखिबो एबे weak electrolyte. Complete. Then addition of कौन लिखिबो बेस ताले वर्तमान देख आगे देखी नियो तापर लिखि दबो बेस कौन NaOH NaOH हेले गोटे एग्जांपल नै कि हमें देखिबा से जहा हबो सबरे से हबो Na plus OH minus ताले pH चेंज करि परिबो कि OH minus ताले OH minus बर्तमान देखि का संगे कंबाइन करिवो NH4 plus हैला करके कौन फॉर्मेशन कर दबो NH4OH NH4OH ता गोटे वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट तेनु से pH वैल्यू को चेंज करि परिबो नाही हैला ताले लिखि दियो when a few drops of NaOH strong acid strong base सब ऐड करिके देखिबो ताले दा OH minus ions of NaOH will combine with NH4 plus ions of NH4Cl to produce NH4OH. न्यूमेरिकल करवा अछि complete आउ एडी वाटर ऐड कले आमे लिखिने एसिड बेस आउ गोटे कौन लिखी वाटर है ताले वाटर कौन वाटर गोटे भेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट पुणी आम एड करुचे स्मॉल अमाउंट रे तेणु जेतिकी H+ आयन बा OH- आयन वाटर रे बाहर दैट इज नॉट सफिशिएंट टू चेंज द pH वैल्यू ऑफ द बफर सॉल्यूशन है बहुत माने एते वाटर मॉलिक्यूल्स नेले सिद्रु गोटे दीटा वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हबो तेणु से जेतिकी H+ बा OH- आयन दबो सेटा एते कम जे सेटा सॉल्यूशन लो pH को चेंज करि परिबो ना है बुझ पारे ताले ता कंप्लीट तापरे आसिला हेंडरसन इक्वेशन
हेंडरसन इक्वेशन है। ना शुणिछ कि आगु हेंडरसन इक्वेशन? So this Henderson equation that is used to calculate the pH value of a buffer solution है गोटे buffer solution रो pH value बाहर करिया पई Henderson equation को यूज करा जाए। केमती यूज करा जाए? Let us see। ताले this equation this is used to calculate the pH value of a buffer solution। है बुझ पार? ताले कौन हेंडरसन इक्वेशन? एसिडिक बफर केस रे अलगा, बेसिक बफर केस रे अलगा एक्सप्रेशन। ताले आगे एसिडिक बफर आगे देख समस्ते बुझ तापर लिखब है। एडवांस लेखनी तत्तर कि लेखनी। ताले एसिडिक बफर गोटे नबा किए एसिडिक एसिड आउ सोडियम एसीटेट। लेट अस टेक an acidic buffer hela that is acetic acid equimolar mixture of acetic acid and sodium acetate। Then what is happening? You see acetic acid sodium acetate eta gote salt, it will dissociate to completely to give CH3CO minus plus Na plus है। एटा गोटे सल्टा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टा तेणु तुम जेतिकी मॉलिक्यूल्स बा मोल्स नहीं थी सब डिसोसिएट होइकी कोन हो जिवे एसिटेट आयन आउ Na प्लस आयन है। से मुझे सिंगल एरो साइन देछि जेतिकी मॉलिक्यूल्स बा मोल्स नहीं थी सब सी डिसोसिएट हो जिवे। अर्थात एटी सोडियम एसिटेट रो कंसंट्रेशन जहाँ एसिटेट आयन रो कंसंट्रेशन सेया। आर यू क्लियर? समस्ते बुझिल? एठी जदि मो एसिटेट सोडियम एसिटेट नेबी केते 1 मोल ताले सेथिरु केते मोल एसिटेट आयन पाइबी 1 मोल, Na प्लस आयन पाइबी 1 मोल। कहीं ना आम जी नहीं एटा गोटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सबू गुड़ाक सबू 10टा मॉलिक्यूल अच्छी माने 10टा आम कौन पाइले एसिटेट आयन आ 10टा Na प्लस आयन पाइबा। 20टा जदि सोडियम एसिटेट मॉलिक्यूल्स नबा 20टा एसिटेट आयन 20टा Na प्लस आयन पाइबा। ताले एठी गोटे जिनस मने रखि था जो एसिटेट आयन रो कंसंट्रेशन जहाँ सॉल्ट CH3CO एनएडाइडी कौन सॉल्ट सॉल्ट रो कंसंट्रेशन सेया हैला। तापरे वर्तमान देखो आमर वीक एसिड एसिडिक बफर एसिडिक एसिड आउ सोडियम एसिटेट CH3COH CO3CO माइनस H प्लस एटा गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट आम 20टा नेला बेलू ये डिसोसिएट हम केतेटा 2टा एमती हम है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तेणु आम ऑस्टुअल डाइल्यूशन लो एप्लाई करबा को केस रे केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे पढ़ी ऑस्टुअल डाइल्यूशन लो दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तेणु एटा हला गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ताले वर्तमान देखो एठी एप्लाई करबा ऑस्टुअल डाइल्यूशन लो। ताले वर्तमान देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट के एल ए कोन पई लिखली वीक एसिड पई ए लिखली हैला। ताले दैट इज इक्वल टू कोन के रो वैल्यू कोन CH3COO माइनस इनटू कोन H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH सबुर कोफिशिएंट केते अछि 1 एठी 1 एठी भी 1 तेणु ऊपर मु आउ 1 1 लिखिली नाही अदर देन 1 थिले सेठी कोन करा जीवो लेखा जीवो हैला। बुझी पारलो? ताहाले वर्तमान H प्लस आयन रो कंसंट्रेशन कोन हबो H प्लस ताले एटा इनटू एटा डिवाइडेड बाय एटा यस और नो। ताले H प्लस आयन कंसंट्रेशन हबो Ka इंटू CH3COH है डिवाइडेड बाय CH3COO
minus. Up to this everybody is clear? समस्ते बुझी पारलो H plus ion concentration that is equal to K into acetic acid divided by CH3CO minus. हैला बुझी पारलो वर्तमान आमर काम है आपको आम pH एक्सप्रेशन को नबा ताले pH एक्सप्रेशन को नबा माने H प्लस पाइले pH माने कौन माइनस लॉग H प्लस तेणु आगे लॉग नबा तापर कौन माइनस नहीं जीवा ताले वर्तमान देख एतिकी लिखि दियो एटा लिभे दबा ना जगह सो यू सी ताले वर्तमान आगे कौन करबा लॉग H प्लस अच्छा एटा देख ये आगे कर दियो H प्लस इज इक्वल टू एटा अलगा कर दियो Ka इंटू एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन दीटा पार्ट एटा कर दियो डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस कंसंट्रेशन बुझी पारलो कौन कली Ka इंटू ये जो एटा बाय एटा को मु गोटे नहीं गली के एटा को गोटे नहीं गली सेपरेट कर देली रुह देख तापरे सो ल CH3 COH हैला ताले log H plus that is equal to कौन हम रे log Ka into CH3 COH divided by CH3 COO minus. That implies log H plus is equal to log A into B, that is log A plus log B. That is equal to log Ka plus log acetic acid divided by what? Acetate ion. बुझिल समस्ते वर्तमान लॉग नहीं गली एटा गोटे पार्ट एटा को धरली कौन ए टोटालटा को धरली बी ताले लॉग ए बी है लॉग ए प्लस लॉग बी सो दैट इम्प्लाइज वर्तमान पीएच को आनिबा माइनस लॉग नबा ताले माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग के माइनस लॉग एसिटिक एसिड divided by CH3COO minus हैला ताले वर्तमान देख माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग के एटा को प्लस कर देबी एटा को प्लस करी माने एटा कौन करबी उल्टे देबी न्यूमरेटर टा डिनोमिनेटर कर देबी डिनोमिनेटर टा न्यूमरेटर कर देबी ताले प्लस लॉग एसिटेट आयन डिवाइडेड देखु थबो कोठी कोन रहि जाउची एसिटिक एसिड यस और नो सो नाउ माइनस लॉग H प्लस दैट इज इक्वल टू व्हाट pH हैला माइनस लॉग K दैट इज pKa सो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग एसिटेड आयन रो कंसंट्रेशन जहाँ तुमको ये देखी थी जो एडी कर नथली आगे फास्ट CH3CO Na एटा डिसोसिएट होगी कौन होइथिला CH3CO माइनस प्लस Na प्लस ताले एटा हला सॉल्ट रो कंसंट्रेशन जहाँ एसिटेड आयन रो कंसंट्रेशन से फास्ट कही डू यू रिमेम्बर मने अच्छी समस्त कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेड आयन ताले वर्तमान एठी एसिटेड आयन बदल रे हमें सॉल्ट लिखि पारिबा यस और नो एसिटेड आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्ट कंसंट्रेशन ताले pH इज इक्वल टू ताले एठी लिखि दियो दैट इंप्लाइज pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग एसिटेड आयन कंसंट्रेशन बदल रे कोन लिखिले सॉल्ट एसिडिक एसिड ता कोन एसिड कहीं आम ये गोटे कमन एग्जांपल नहीं गोटे पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं तुम्हें जो न्यूमेरिकल कर तो सब सल्ट एसिडेट सोडियम एसिटेट नथिबो कि सब एसिडटा वीक एसिड नथिबो एसिडिक एसिड नथिबो तेणु जनरल एक्सप्रेशन आम लिखिले हैला ताले pH इज इक्वल टू pKa प्लस माइनस लॉग के रो वैल्यू है माइनस लॉग के को जेमती माइनस लॉग H प्लस को कौन नेले pH
सेमती माइनस log Ka को नेले pKa plus log salt concentration divided by acid concentration. Are you clear? Again I am repeating, you see Ka is equal to acetate into H plus ion divided by acetic acid concentration. So H plus ion concentration is equal to Ka into acetic acid by acetate ion. So H plus ion concentration is equal to Ka into acetic acid divided by acetate ion. बर्तमान मु आको pH फॉर्म को नेली ताले आगे log H plus गुणिली. So log of Ka into this, तापरे log of Ka plus log of this, then minus log H plus is equal to minus log Ka minus log this. बर्तमान एटा को प्लस करिया को चाहिए तेणु एटा चेंज करदेली ऊपर को एसिटेट आयन तले एसिडिक एसिड नहीं आसली ताले माइनस log H plus है pH माइनस log Ka है pK प्लस log एसिटेट आयन रो कंसंट्रेशन जहाँ सॉल्ट रो कंसंट्रेशन सेया तेणु एटी सॉल्ट एठी लिखिदेली एसिड. तुम जो तुम क्वेश्चन एसिडिक एसिड न था कि आउ को एसिड थी वीक एसिड कार्बनिक एसिड थी ताले एटी आमे कोन लिखिदेले एसिड रो कंसंट्रेशन वीक एसिड है बुझ पाल राइट डाउन. log salt concentration लिखी तो समझते डिवाइडेड बाय एसिड concentration है concentration in which term moles per liter. So this is the Henderson equation for acidic buffer. ताले तुमको कौन जना अछि जदि pK वैल्यू जना अछि salt रो concentration जना अछि और acid रो concentration if you know, then using this expression you can calculate the pH value of the buffer solution. हैला. So now we will take a basic buffer solution and we will derive Henderson equation for that basic buffer solution. So let us consider a basic buffer solution. That is NH4OH mixture of NH4OH and equimolar mixture of NH4OH and NH4Cl. है तुम ये गार टाणबनी मुझे आम करने टाणीदेली एक्सप्रेशन बाहर करने है ताले NH4Cl डिसोसिएट कला केमती ना NH4 प्लस प्लस Cl माइनस. yes or no, this is the salt. NH4Cl टा कौन salt. So NH4 plus रो concentration is equal to NH4Cl concentration. कहीं ना गोटे strong electrolyte 1 mole NH4 dissociate कले कौन देला 1 mole NH4 plus ion देला हैला. ताले तापरे NH4OH that is NH4 plus weak electrolyte. तेणु weak electrolyte केस रे आमे ओस्टोल डाइल्यूशन लो ये कर दबा एडा weak base तेणु आमे कोन लिखिले Kb. So Kb is equal to NH4 plus into coefficient 1 अछि तेणु to the power 1 divided by NH4OH. Are you clear? आगे देखो then वर्तमान Kb is equal to अलगा कर दियो आगे OH माइनस बाहर कर दियो. OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस Kb इंटू केते NH4OH डिवाइडेड बाय NH4 प्लस. दैट implies OH माइनस आयन concentration is equal to Kb into NH4OH divided by what? NH4 plus. yes or no? NH4 plus. then बर्तमान POH बाहर करिबा हैला ताले POH केमती बाहर करिबा माइनस log OH माइनस एटा बेसिक सॉल्यूशन टा तेणु बेसिक बफर माने आमे एथिरे pH डायरेक्टली बाहर करि परिबा नाही आगे POH बाहर करिबा pH plus POH हैला 14 रु POH माइनस कर देले पाई गेले pH ताले log OH माइनस is equal to log Kb एकाथरे लिखि दउची log of Kb into this log Kb plus log ना असुविधा हबो log NH4OH एटा हला NH4OH divided by NH4 plus
है जहाँ देखा जाऊन डाकी दूसरी log OH माइनस आयन इज इक्वल टू log Kb प्लस log NH4OH बाय NH4 प्लस ताले माइनस log OH माइनस इज इक्वल टू माइनस log Kb माइनस log NH4OH बाय NH4 प्लस वर्तमान ताहले माइनस log OH माइनस हला POH माइनस log Kb हला PKb एडी प्लस कर देबी log NH उल्टे देली NH4 प्लस डिवाइडेड बाय NH4OH हला ताहले दैट implies POH is equal to PKb plus PKb log NH4 plus आयन concentration का संगे समान salt रो concentration संगे समान ताले log salt by base that is POH हला so pH is equal to 14 minus POH so pH is equal to 14 minus PKb 14 minus PKb minus log salt by base है ना नहीं हला so this is your end of today's class है आज ये सरीला Henderson equation by using this equation we can calculate the pH value of a buffer solution. That buffer solution may be acidic or basic buffer solution. So in the next class we will solve some problems using Henderson equation and then we will go to the next portion of your last portion of equilibrium chapter.